शुरू कर Hmm. रहे हैं क्या? Hmm. ओके, आई हैव So टू डू ओके। yeah, so I think we were on this topic of racism. So let's start there, है ना? With Enzo Fernandez and Fofana and all. कैसा क्या लग रहा है चेल्सी का मतलब क्या हाल होगा अभी? चेल्सी का यार मुश्किल है यार बोलना है, लाइक इट्स एवरी सीजन न्यू एक्सपेक्टेशन, सेम शिट हो जाता है, लाइक लास्ट 2 सीजन नहीं, से हो रहा है। वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये हाँ बिकॉज ऑफ द रेसिज्म इंसिडेंट मतलब क्या हाँ, होने वाला racism है? incident, like it's not the first time, like as the memes are saying, हम्म. racism, Italian bald manager, uh, everything and all, old Chelsea is back. That's like a thing, like सब लोग बोलते हैं memes में। But यार सीन वही है ना, like ये सब जो बाहर जो दिखता है, like Instagram and all आके पहले ऐसा सीन नहीं था। हम्म. Like never know Instagram earlier when Bainbridge and John Terry scene happened. We don't know what happened in the dressing room. Okay? But with the social media, it's like very open, which shouldn't have been. Like players openly unfollowing, but it's not their fault as well because like उनके PR टीम ही बोलती है अनफॉलो करो वरना तुम्हारा इमेज चलेगा। सिंपल वही बात है हम्म. मुझे जो लगता है कि पहले उतना एक्सेस नहीं था ना फैंस के साथ प्लेयर्स का। इफ यू जो हुआ हम्म. था, लाइक इफ यू रिमेम्बर जॉन टेरी वेरी ग्रेट सीन, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द ड्रेसिंग रूम विद बिगेस्ट बर्स्ट अप। मैं तो बोलूंगा विद एवीपी एंड द सीनियर प्लेयर्स इन ड्यूरिंग द हम्म. चैंपियंस लीग सीजन जिसमें हम लोग चैंपियंस लीग हम्म. जीते थे। यू डोंट नो देयर वाज द बिगेस्ट बिग बर्स्ट अप, एवरीवन न्यू व्हाट हैपेंड, लाइक indirectly knew but we didn't have inside information who is in which side. But with हम्म. social media what I feel is like we have the inside information भी पता चल जाता है कौन किसी साइड है कौन किसी साइड नहीं। So I हम्म. feel like it's very like people should like these kind of players should be responsible in like on social media, like what they do, what they don't do. ठीक है? हम्म. And I feel it's unfair for Enzo Fernandez as well. He's not the only one singing. There are so many players that have been singing that has not been talked about. There are so many Premier League players. There's so many La Liga players from big clubs on that team. No one is being pointed out. He has been singled out because he's the screenshot that's been like or the portion of video that's been shown. हाँ, मतलब He's he's on the taken the main video focus on himself. there. हम्म. Yeah, himself. Yeah, that's like अब हो जाता है भावना में तो लोग बहक जाते हैं after winning. Of course, if you're winning, you're doing a quadruple. Wait, that's not a mean feat, right? International tournament में quadruple मैंने नहीं देखा था. I've seen a hat trick with Spain. यूरो वर्ल्ड कप यूरो, ठीक है। क्वार्टरपल इज लाइक वेरी बिग थिंग एज अ नेशनल टीम। यू हैव वन द वर्ल्ड कप, सॉरी हम्म. दे स्टार्टेड विद कोपा, फाइनलिसिमा, वर्ल्ड कप एंड अगेन कोपा। दैट्स लाइक क्वार्टरपल, continuous 4 trophies as a national team. That's a very big thing. Like I don't know, like in the history of football कभी अचीव हुआ भी है कि करेक्ट. इतने हाँ. लाइक उतने ट्रॉफीज था भी नहीं। सो या हम्म. तो यहाँ इफ यू लाइक यूर ड्रंक एंड एवरीथिंग समझ सकता हूँ, बट हाँ लाइक हुआ है, लाइक इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, यू आर अ वेरी इंस्पिरेशनल फिगर, इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग दैट दे सिंग। बट एक और लाइक आई काउंटर माई सेल्फ एज वेल बिकॉज लाइक आई हैव सीन वन मोर थिंग, लाइक आजकल एक सीन चालू हुआ है आफ्टर विनिंग अ ट्रॉफी, लाइक players are like undermining other players. For example, हम्म. Kukurea, the हम्म. Haaland chant. क्या जरूरत है? Haaland is not there. Haaland नहीं है. Okay. हम्म. I recently one more I saw Morata like cussing Musiala. भाई बच्चा है भाई मोराटा, तुमने क्या किया, मुसियाला क्या कर रहा है भाई वो देखो। हाँ. You haven't seen that video, I'll send you. नहीं नहीं. हाँ. Morata in the same celebration, Morata is like asking where is Musiala and everything. भाई मुसियाला अरे. बच्चा है तुम्हारे, मतलब क्या बताओ यार। यू सी लाइक तुम कहाँ हो यार, तुमने क्या किया, मतलब आई नो यूर अ गुड प्लेयर, तुमने इस यूरो हम्म. में जो किया है लाइक फुटबॉल फैनाटिक्स ही समझ सकते हैं, आउट ऑफ फुटबॉल प्लेयर नहीं समझ सकते द होल्ड अप एंड एवरीथिंग। हम्म. बट यार डोंट कम लाइक डोंट डिसलाइक सच यंग प्लेयर्स ना, मैं वही बोल रहा हूँ। लाइक आजकल का ये ट्रेंड समझ में नहीं आता। इट शुड देयर शुड बी लाइक हम्बलनेस ऑन विनिंग। Celebration should, I always believe if you win anything you should be humble on winning. Like you shouldn't No. diss, like you shouldn't make small, if and unless the opponent you're dissing has said something before that. For example, I'll give an example. Like Rabio had said about Yamal, he needs to do this, that. हम्म. Then Yamal scored and he did this. That's okay. That's acceptable. But unnecessary किसी को diss मत करो ना. Be humble on your like on your wins ना.
like unnecessary. ये मेरे को लगता है ये सब unnecessary है. What's your So, opinion? Tell me. with the Rabio scene, let me start from that. Actually, as far as I हाँ. remember, he just said we are going to make it tough for Yamal and like all of that, which Yeah, actually yeah, for me yeah. signifies that they think Yamal is a very good player, which is why they want to make it tough Correct, for him. correct. They're acknowledging as well. That's a very big thing. 16 year Acknowledging, को but acknowledge also करो. like acknowledging, but also Yeah, poking. Okay, so yeah, ठीक है, poking, poking. Yeah. those are like those are little mind games and all, and fine, Banter, whatever you हाँ, वो call तो it. I चलेगा. don't think it's Correct, too correct, bad. correct. For me, like you said, right? Like it's I think with the Enzo incident, मुझे ऐसा लगता है कि um, it's very difficult for say a player like say Fofana or Disasi, all these guys, right? It becomes little difficult for them in the age of social media, even if they don't care, because their fans and everyone will care. And at the end of the day, like how many people follow you and all determines your wage and determines like your marketing and so on. So even if they are like, ठीक है, we know Enzo Fernandez, वो हमारे बच्चों के साथ भी खेल चुका है and whatever हाँ, whatever, है ना? और yeah. मतलब ऐसे ही मतलब कोई भी बकवास सा गाना गा रहा है, ठीक है. I think it's like if we sing volume one, okay. I think if we sing volume one, Good do example. we Correct. like boys and girls both have sung it, when adults, when youngsters, you know, everyone True. has sung We have it in seen. front of We you, have we and have we have all examples. sung We it, have right? examples. We have seen that. We have examples in our schools. Exactly. But Yeah. does that mean that we actually abide or Mean follow it. Yeah. those Yeah. Exactly. words Oh of yeah. the Exactly. song? Yeah. Probably Yeah. not. Mean it. Like, I We don't mean it. We mean it by heart. We don't. It's just a song. We sing it know. like to be Exactly, along the exactly. crowd in the moment. Same, Yeah. yeah, same thing happened with Mudrik, right? Yeah. Yeah. Basically, I think just before he came to Chelsea or while he was at like in his initial few days, he was singing along to a song and the song had the N word and Mudrik Yeah. says it, ठीक है? तो मतलब फालतू में उसको बैकलैश मिला. मतलब I feel like Correct. Correct. these things are very silly, okay? इतना मतलब we shouldn't be such sticklers. Of course Enzo को भी ध्यान रखना चाहिए, not taking away anything from that. But I also feel like जो बाकी के players है अपने, एक तो as you said right, social media है, सब लोग देख रहे हैं कि क्या फोफाना अभी भी एंजो को फॉलो कर रहा है. Correct. Okay. Correct. Correct. And one thing was, I think it got blown out way out of proportion. ठीक है, it was a bad song. Enzo apologized. Okay. I think that Right. should be the end of the topic. I think It that should have should be the ended end of the there. topic. Yeah. Why were politicians from both countries, Exactly. My steering the point. Yeah, debate? football, bro. Um, I think सही Demba बात Ba है. also decided to speak. Yeah, yeah. I saw like why? Like Right? it's like I'll tell you like for it's like you see I've seen the Amit Mishra scene na, in Indian cricket right recently. You Hmm. haven't seen that, huh? He's talking about like he just recently did a podcast and he's talking about Virat Kohli like I knew him from before. Hmm. He Hmm. doesn't Hmm. acknowledge me, etc. It's like I हाँ. feel like people who are not relevant relevant tries to be like they try Of to be course. relevant with these shit and etc. But it's like remotely connected, थोड़ा connection मिल जाए ना इनको. They try to be Hmm. relevant. I have utmost respect for Demba Ba. He has done like एक दो season था, but he was very good. I respect him. बट ना मुझे ये पसंद नहीं आता फॉर्मर प्लेयर्स हु आर नॉट रेलिवेंट या थोड़ा कनेक्शन मिल जाए ना आई बी रेलिवेंट अगेन इसको लेके मैं रेलिवेंसी क्रिएट करूँ हाँ. दैट आई डोंट लाइक एट ऑल Actually, लाइक actually, in that sense, right? Like you can be relevant even if you are like irrelevant. You just need to find the right way. For example, John Obi Mikel, ठीक है? करेक्ट उसने वो करेक्ट उसने वो ओबी वन पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया. पॉडकास्ट कितने करेक्ट मजेदार है, ठीक है? सब लोग देखते हैं, सब लोग जोसे मोरिन्यो वगैरह आ चुके हैं उसपे, राइट? एवरी लाइक लिट honestly speaking, most people had forgotten Mikel, ठीक है? From हाँ that हाँ class. Okay, like very honestly. I mean, they remembered him, but not as much as like Ashley करेक्ट Cole and करेक्ट हाँ Series and हाँ Lampard, एग्जैक्टली right? एग्जैक्टली क्योंकि Uh, लाइक या हाँ बट फिर भी वो करेक्ट आ गया इसमें, मतलब वो बोला ठीक है मैं इस तरह से रेलेवेंट रहूंगा, राइट? लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है? सो लाइक आई फील लाइक दिस इज सो स्टूपिड, है ना? एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर पॉलिटिशियंस टू बी इन्वॉल्व, बट वहां पर हाँ लाइक एग्जैक्टली the एग्जैक्टली या Argentinians are doubling down, है ना? And the French people are like doubling down. A little bit of nationalism should be there, I feel. One should, if you should support the country you live in, है ना? तो वो तो मुझे लगता है. And I guess like till maybe that doesn't happen in the public eye, people will say this, but again, little controversial.
But Yeah, I mean, it's very, very silly, right? Like completely blown out of proportion. yeah, So that talk exactly. could Like, stop. There are many other incidents as well which don't get this much traction. For example, Griezmann and all have been caught doing oh yeah, the mocking, है Asians, ना? mocking Which is Asians. Yeah, again, I still, as someone who really thinks humor should not encompass or should be beyond rather all of this stuff. Like you should be able to joke about everything, right? yeah, Um, I think even that should just have been let go. I mean, of course, वो भी वापस आ गया. वो भी like, ओ देखो फ्रेंच वाले ये कर रहे हैं तब चलेगा. yeah, अर्जेंटीना yeah, वाले yeah, ये बोल रहे तो नहीं चलेगा. Just yeah. it's just like jokes and banter, right? That's why Hmm. like I think हमारा जो era मतलब हमारा era नहीं मतलब but before, as you said, when social media wasn't there, the kind of banter and stuff that used to happen was so incredible, right? Like, do you Correct, remember Pizza Gate? correct, है ना? correct. Fabregas has thrown pizza at Pizza Gate, Alex of course. Pizza Gate, of course. Alex Ferguson. Ferguson. Yeah, yeah, Pizza Gate. Right? I remember Jose Mourinho once went and poked someone's eye. तो कुछ भी कुछ Oh, होता yeah, रहता Tito है ना? Varanova, that El हाँ, Clasico, biggest fight. ठीक है. Ah, obviously, yeah. Exactly. तो कुछ भी कुछ होता रहता था. And it was fine, right? It was fun also. Like, of course, poking eye is not so much fun. But as long as no one gets Yeah, seriously hurt and, like people forgive and forget, it's fine. And people apologize, of course. जो एंजो ने yeah, किया था, yeah. which I felt was like should have really ended. And I feel like now it's going to be so sad for us. Now at Yeah. Chelsea there might be tensions. Maybe there might not be. Who knows? But yeah. Huh. But like, I feel like as professional footballers, you are like, when you're on the field, it shouldn't reflect anything. मैं यही मानता हूँ यार. When you're professional, Hmm. it shouldn't matter anything. It shouldn't matter at all. Said, so actually now they are not just professional players. That's the problem. Hmm. Okay, they are professional artists who have an image to maintain. Okay, Influences, better word, not yeah, influences. or celebrities. They are more Celebrities, celebrities than celebrities, players, right? So celebrities. Correct, तो correct. हमें ये सब आई हाँ, होप ऐसा हो कि नहीं, ये सब like करना पड़ा. exactly. मेरा एक question है, ठीक है? Suppose David Beckham would be relevant in this era where Instagram and everything, ठीक है? जहाँ पे Instagram के highest followers is Cristiano Ronaldo, ठीक है? I think David Beckham would have been the number one. तभी भी होता, like if he was in this era, ठीक है, like Instagram era. And ठीक है, वो like उसका कोई मतलब cancel culture चला नहीं, ठीक है. But do you think like Instagram तभी होता, वो इतना relevant रहता, इतना cancel culture तो एक बार चलता उसके against, कुछ ना कुछ तो campaign निकलता है. Like सीन है ना, like margin of error बहुत कम है आज की जैसे celebrities के बारे में. कुछ भी मतलब थोड़ा तुम 10% इधर कर दो, like you're cancelled and everything, you're on the news, like it's very wrong, I believe. ना नहीं होना चाहिए. एंड आई फील लाइक जो लोग को एक्चुअल में कैंसिल होना चाहिए वो लोग नहीं होते. ठीक है, जैसे पार्टी है, ठीक है, Correct, correct, correct. राइट? लाइक those guys probably have indulged in not very good behaviors. हाँ और वो हाँ. लोग को कैंसिल नहीं कर रहे और यहाँ पर जैसे एक चैंट बोल दिया तो लड़ाई हो गई. वही, मतलब yeah, प्रायोरिटीज आर that's नॉट स्ट्रेट, राइट? yeah, exactly. Priorities तो बिल्कुल straight नहीं है. What is needed, what is not needed, like it's very टुडे different. one of the biggest clubs in France has signed Mason Greenwood. Suarez को भी देख लो. He was so proven. हाँ, racism and भाई physical assault, ठीक है. I'm not comparing, but है रेसिज्म problems छोड़ो है. भाई, कैनिबलिज्म क्या है? तुम जाके रास्ते पे तो किसी यार, को काट डालो, काटो ऐसे तुम्हें जेल में डाल देंगे, ठीक है? और correct. एक बार But yeah, नहीं, दो Suarez बार का नहीं, 3 times ब्रो, तीन थ्री बार, टाइम्स three times. Once in Ajax when he was the Ajax captain. Second, Liverpool लिवरपूल. with Ivanovic. Ajax के साथ किसको काटा था मुझे याद नहीं आ रहा, but that was very old scenario, ठीक है, बहुत पहले की बात है. Ivanovic लिवरपूल मैंने लाइव मैच देखा था, ठीक है. And third also live match देखा था, Kileni in 2000 I think 14 ब्राजील वाला वर्ल्ड कप, राइट? किलेनी को इधर इधर काटा था. इंग्लैंड वाले ग्रुप में ही तो थे ना. या That's when like Suarez like kicked out England and like Liverpool was against him, like full scenario था. Brian Ruiz kicked out England and Italy with Costa Rica. That was what happened. Not True, Suarez true, kicking out true. anyone.
ट्रू नहीं नहीं That वो was लाइक that group. एक मीम था लाइक लिवरपूल में था सुआरेस हाँ वो ब्रांड लुइस तो भाई वो तो लेजेंडरी स्टफ दैट्स द स्टफ ऑफ लेजेंड्स तो वही हो गया But when Sadio Mane, for example, या so why doesn't he, like, why do you think उसके खिलाफ like लोगों ने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, मतलब पहले तो I've मतलब तो I've seen that story हम्म, yeah I got your point I got your point I've seen that story as well बट वही है ना लाइक साडियो माने फीड्स हिज होल विलेज एटसेट्रा इमेज की बात है आज के में बोलते हम्म, इमेज की बात है दैट लाइक schooling and etc that comes under village and etc I'm not sure how he looks at her etc जिसने भी फैलाया है सीन ठीक है बट लाइक अल्टीमेटली इमेज की बात आती है इमेज जो बिल्ड हुआ है लाइक पास्ट डेकेड में उसी से बात चलती है सिंपल वही है ठीक है एंजो फर्नांडिस का मैं बोलूँ इमेज का सीन अर्जेंटीना का लाइक इमेज थोड़ा खराब हो गया हम्म, खराब हुआ है लाइक नॉट नेसेसरीली बट खराब किया है लाइक बिकॉज ऑफ दिस बैंटर ना रोनाल्डो मेसी लाइक आज के जमाने में कहीं और ही चला गया वो बैंटर दैट्स नॉट अ बैंटर हम्म, एनीमोर दैट्स लाइक पर्सनल कीचड़ फैलाना पर्सनल मर्डिंग ओके हम्म, like you want to like stone people to death if you are a Messi fan you want to stone Ronaldo fan to death ऐसा हो गया it's not healthy anymore right, अब right. थोड़ा भी डर्ट मिल जाए ना लाइक उसके हम्म, प्लेयर्स के बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट टीममेट के अगेंस्ट ना अभी लाइक गोज लाइक वाइल्ड फायर हम्म, ऐसा हो जाता है आजकल सो आई फील लाइक एंजो इज विक्टिम विक्टिम तो हुआ है लाइक बोला है क्या बोला है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट विक्टिम तो हुआ है उस पार्ट का वो लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ दैट आई एम हम्म, सेइंग एंजो ने लाइक इट्स पार्ट ऑफ दैट लाइक वही फील है लाइक एंजो लाइक इज द गुड लाइक अर्जेंटीना का अच्छा प्लेयर है आज हम्म, मेसी का वो फैन है लाइक उसके बाद तो यार इट विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर जो भी हुआ है तो मैं वही बोल रहा हूँ लाइक आजकल के जमाने में लाइक इफ यू आर अ पोर्चुगल और अर्जेंटाइन प्लेयर थोड़ा भी यू हैव नो लाइक नो मार्जिन फॉर एरर यू हैव नो मार्जिन फॉर एरर तो आज तुमने कोपा जीत लिया उसके बाद तो एरर ही नहीं है भाई तुम कुछ भी नहीं कर सकते तुम पैर इधर रखो तुमने लेफ्ट पैर क्यों बढ़ाया सॉरी तुमने राइट हम्म, पैर क्यों बढ़ाया यू नॉट मेसी फैन राइट पैर हाँ, क्यों बढ़ाया रोनाल्डो फैन ऐसा हो जाए ऐसा ही होता है लाइक यू सही सी बात ना है, लाइक कुछ भी होता है आजकल सोशल मीडिया में कुछ हाँ, भी तुमने राइट right, पैर बढ़ाया इसका मतलब तुम कल आर्टिकल आएगा इसने राइट पैर पहले रखा बस में ही रोनाल्डो फैन ये होगा कैसे हाँ, खेल रहे हैं रोनाल्डो यही होता है आजकल सोशल मीडिया करेक्ट ना करेक्ट मी इफ right. आई एम लाइक इफ आई एम रॉन्ग लाइक यही Of होता है course, आजकल of लाइक course. इट्स वेरी हाँ यही होता है आजकल सोशल मीडिया में दैट्स Um, लाइक सिमिलरली लाइक रीसेंट न्यूज ना लाइक देयर वाज अ फीमेल अर्जेंटाइन प्लेयर शी इज गोना प्ले द वर्ल्ड कप दिस ईयर शी yeah. हैज लेफ्ट फुट में माराडोना का टैटू है राइट फुट में रोनाल्डो का टैटू है मेसी का टैटू हम्म, नहीं लाइक शी हाँ, वाज अब्यूज्ड लाइक एनीथिंग मुझे on याद है, सोशल हाँ, पता मीडिया है, yeah, क्यों लाइक व्हाई लाइक क्यों भाई उसने उसकी मर्जी भाई उसको yeah. दिल में वैसी उसके दिल में वैसी होगा भाई किसी को बता नहीं रही होगी भाई टैटू करने की जरूरत नहीं उसके दिल में वैसी है हो सकता है ना हो सकता है हाँ नहीं हुआ भाई तो भी क्या दिक्कत है भाई, कोई वो भी किसी का क्या भी ही फैन दिक्कत है है, तुम्हें इट्स सही इट्स में। नॉट इट्स नॉट भाई फैन नहीं है बट इट्स नॉट दैट शी नॉट रिस्पेक्ट मेसी ऐसा तो नहीं है ना ऐसा तो कहीं नहीं बोला उसने फैन नहीं है बट आई रिस्पेक्ट ऐसा तो हो ही सकता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता इफ आई एम नॉट अ फैन नहीं, आई अरे वोंट रिस्पेक्ट तो कोई रिस्पेक्ट ऑल्सो लेट इट बी, ठीक है, यू कैन बी हाँ इग्नोरेंट वॉट एवर इट माइट बी, इट्स हाँ योर बॉडी, योर मनी, योर टैटू, जो टैटू करना है करो, करेक्ट है ना, करेक्ट करेक्ट एज करेक्ट लॉन्ग एज कुछ ऐसे गाली वाली नहीं लिखा है जो सबको दिख रहा है, यू नो, ऐसे फेस पे हाँ विच हाँ माइट नॉट बी द करेक्ट बेस्ट, लाइक बच्चों बच्चों को दिखेगा whatever, बट बाकी तुम्हें करेक्ट करेक्ट जिसका फोटो डालना है डालो, क्या प्रॉब्लम है उसमें, हाँ tattoo तुम्हारे your पैसे body you can तुम्हारा do anything exactly एग्जैक्टली, your body your money you can do anything या योर बॉडी योर so मनी, इंक भी तुम ही खरीद रहे हो, yeah पेन भी तुम्हें ही हो रहा है, जो टैटू का तो ah फैंस को क्यों पड़ी है कि exactly क्या टैटू है क्या I नहीं, know सो या yeah these are चूज, all very unnecessary I feel. नॉट वेरी, These are all very not these are all very unnecessary I feel in social media या, ये जो होता है ना वेरी अननेसेसरी कोई जरूरत नहीं भाई कर लिया इवन लाइक फॉर इनफैक्ट लाइक गारनाचो के लिए भी मुझे बुरा लगता है ठीक है इज अ हाँ, वेरी गुड प्लेयर आई फील ही हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल इज अ वेरी या, गुड प्लेयर यूनाइटेड में लाइक ही हैज अ गुड फ्यूचर उसका भी वही होता है ना इज अ बिग रोनाल्डो फैन क्यों नहीं होगा भाई लाइक इफ ही इज प्लेइंग यूनाइटेड में कब गया आई डोंट नो टाइम नहीं कब गया यू नो इज ही फ्रॉम यूथ एकेडमी और समथिंग और लाइक इज ही gone नो from नो, a इट्स very फ्रॉम young यूथ, age I'm not आई sure थिंक ही इज बीन देयर फॉर सम टाइम,
But Yeah, he's plus, been there for something. many people grew up watching. Forget all that. Many people grew up watching just the Premier League. ठीक है? हाँ ऑब्वियसली Like हाँ us. वो भी है ठीक है? बिग फैक्ट हम लोग बिग फैक्ट हम लोग कहाँ ला लीगा मतलब बीच में ही देखते थे एल क्लासिको के लिए दैट टू व्हेन लाइक या वो तो अलग चीज था है ना तभी देखते थे बाकी तो प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग ही देख रहे थे हाँ हाँ तो लाइक प्रीमियर लीग वाज obviously अ like there बिग is a high ब्रॉडकास्टिंग chance सिनेरियो करेक्ट yeah and हाई no चांस हाँ but obviously there is a high chance that that person can be a Ronaldo fan you actually में देख रहा था फुटबॉल like हाँ हाँ not to again I know Messi plays very well okay but many of his fans are there based on highlights and such क्योंकि कोई इतना लालिगा देखता ही नहीं था नहीं ये सीन है दिस इज फैक्ट लाइक प्रीमियर लीग वाज लाइक द नंबर वन लीग लाइक इतने सालों अभी भी है आई डोंट नो इट्स आई थिंक अभी भी है उस of टाइम course से अभी भी है लाइक व्हेन प्रीमियर लीग 2000 अर्ली 2000 90 से शुरू हुआ था इंडिया में आया था लेट 90s में बट लाइक 2000 से अभी तक मैं बोल रहा हूँ लाइक जो बच्चा बच्चा फर्स्ट लीग क्या देगा प्रीमियर लीग देगा आज चेंज हो गया ला लीगा वाली का वो लोग फैन कोड वहां पे कहाँ पे देखते हैं बट प्रीमियर लीग आई थिंक आई हैव सीन प्रीमियर लीग इज द ओनली लीग इफ यू सी ना करेक्टली जो टीवी में दिखाते हैं आज ला लीगा एटसेट्रा लाइक दे आर शोन इन स्पोर्ट्स 18 आई डोंट नो लाइक कहाँ पे करेक्ट दिखाते हैं इंडिया में देयर आर इतना नहीं डिफरेंट चैनल्स इंडिया में पहले इफ यू रिमेंबर ला लीगा एंड प्रीमियर लीग सीरिया भी दिखाता था स्टार स्पोर्ट्स नियो सेंटर इफ यू स्पोर्ट्स पे रिमेंबर आता था नियो स्पोर्ट्स पे सीरिया या करेक्ट करेक्ट बट आज के जमाने में देखोगे टीवी आज के जमाने में टीवी में एक ही लीग दिखाती है प्रीमियर लीग दे हैव अ सेपरेट चैनल फॉर दैट स्टार या स्पोर्ट्स करेक्ट सेलेक्ट या प्रीमियर लीग का व्यूअरशिप इज लाइक हैव बीन तो लाइक डिफरेंट लेवल ऑब्वियसली एंड बच्चा बच्चा वही देख के बड़ा हुआ है and this is not just the case here बाहर भी मतलब सिमिलर बाहर भी सिचुएशन वही मैं बोल रहा हूँ बाहर भी वही स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज में प्रीमियर लीग इज अ वेरी बिग थिंग आज के ट्रांसफर र्यूमर्स में तुम देखोगे लाइक सब जो बड़े बड़े प्लेयर्स है अफ्रीकन प्लेयर्स उनके बचपन में उनका कोई फेवरेट क्लब है दे हैव लाइक जर्सी एंड उनके बचपन में फोटो है लाइक ओशिमेन एंड ऑल ही वाज अ चेल्सी फैन ही इज ओपन अबाउट दैट तुम देखोगे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है लाइक इट्स लाइक ओपन अबाउट देयर ओपन अबाउट दैट एंड दैट्स अ गुड थिंग लाइक देयर ओपन अबाउट दिस स्टफ नहीं so my point was कि so person like say Garnacho or that Argentine player that female है ना That so sounds these very people wrong. ये काट देना भाई फीमेल अलग से बोल रहे हैं तो लेट्स क्या बोल रहा हूँ लेट्स सर्च हर नेम उसके बाद इसको एडिट करना तो वोक लगेंगे हम लोग भी ठीक है तो ये टीच ठीक है ये रिकॉर्डिंग में तो एडिट करोगे ये सब नहीं डाल हाँ हाँ क्या सर्च कर रहे हो लेफ्ट फुट वाला राइट फुट नहीं नहीं I'm searching that female Argentine player insulted for Ronaldo tattoo, right? Yamila Rodriguez. Her name is Yamila Rodriguez. यमीला Okay. रॉड्रिगेज एंड द वुमेन्स वर्ल्ड कप इस साल है कि नहीं वो देखो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इस वो भी देखो तो वोक लगेंगे हम हाँ ये साल ये 24 हाँ नहीं अंडर कहाँ 20 पे हो रहा is है वो भी देख लो नहीं अंडर 20 is there Is she playing somewhere? Rodriguez World Cup नहीं हो रहा है नहीं शायद पर नहीं यार फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 23 में ही हो गया है ठीक है यमिला रॉड्रिगेज 26 इयर्स ओल्ड हाँ ओके 23 में हो गया था बट either way point is चलो Yamila Rodriguez and Garnacho probably they have grown up watching the Premier League like most of us Exactly. therefore Yeah, exactly. they like some player who's from the Premier League more than a player who's from La Liga Yeah. even though he might be the most popular player from their country and definitely the most popular player in the world alongside 2-3 others Yep. right so it's fine if they like the most popular player who played in the Premier League है ना Correct. अभी आ रहा है न्यू प्रीमियर लीग सीजन न्यू बुंडेसलीगा सीजन न्यू ला लीगा सीजन आप सब ला लीगा देखेंगे क्योंकि un dos tres थाला मदरे तो लाइक लोग पागल ही हो गए हैं the but like the craze like last time when you saw ये scene it's like true last time ये craze हुआ था रोनाल्डो जब आया था बर्नअबो जब रोनाल्डो और आया एक था टीम उसके बाद बेल आया था लाइक इट हैपेंड बैक बट टू बैक रोनाल्डो यप रोनाल्डो बट रोनाल्डो का थोड़ा बड़ा था ऑब्वियस
And similarly, if you see some other club, ये presentation similarly नेमार के लिए हुआ था बारसा, when he came to करेक्ट Barca, उसके लिए भी हुआ था. But Ronaldo and Mbappe is like standout scene. It's like it's very similar. प्रेजेंटेशन यू आर बहुत सेइंग लोग हैं. Presentation. I'm talking about करेक्ट presentation. या oh हाँ. I thought you're And like talking about present. when people started watching sorry No, when no. हाँ, like वो तो है ही, वो तो है ही. Like वो अलग scenario है. But presentation है और like presentation होना चाहिए ऐसा. Like Premier League में ऐसा presentation होता नहीं. You know. प्रीमियर लीग में प्रेजेंटेशन होता नहीं है. लाइक होता भी हो तो कोई दिखता नहीं है. लाइक इट्स ऑल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, या पैम हियर वी गो, क्लब क्लब में कोई क्लब की कोई बंदी जर्सी बेच रही होती है, इधर नाम चिपकाती है, बोलते योर फैम, योर ब्लड, योर ब्लड, योर मान ह्यूज देयर, ऐसे करके कोई कोई रैंडम कोई आ जाता है, कोई करता है. लाइक बिग बिग ट्रांसफर लाइक होना चाहिए प्रेजेंटेशन. इवन इंडियन फुटबॉल में होती है. यू डोंट फॉलो इंडियन फुटबॉल, आई टेल यू, इंडियन फुटबॉल में ही होती है. I'll send you a video कल के लिए, ठीक है. East Bengal have signed Jackson Singh, ठीक है. He's the only Indian to score a World Cup, score a goal in FIFA World Cup under 17. Like any FIFA competition, he's the only. He's the जैकेसन CDM. He signed for from Kerala to East Bengal, and that's the record transfer fee, ठीक है. 10 crore, 10 crore is the highest Indian transfer fee he has signed. तो उसका लाइक प्रेजेंटेशन हुआ है. लाइक दिस इज अ वेरी बिग थिंग. लाइक हर एक प्लेयर का लाइक हर जगह होता है प्रेजेंटेशन, एक प्लेयर का. आई फील लाइक दैट्स लैकिंग इन प्रीमियर लीग. व्हाट डू यू थिंक? प्रीमियर लीग में ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए यार. बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, सी थोड़ा दो हाइप तीन बनता है ना चीजें प्लेयर्स का. मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ व्हाट आई फील. ठीक है, एक तो दो तीन चीजें. मेन मुझे लगता है कि इतने बड़े प्लेयर्स आज लास्ट 10 years में नहीं आए. ठीक है, प्रीमियर ट्रू लीग ट्रू महंगे ट्रू आए ट्रू. हैं, प्रीमियर लीग ट्रू. कॉस्टली महंगे आए. गाइज हैव कम, extremely big guys have not. Okay. दैट्स वेरी Neymar, ट्रू. so big matlab those who have like that समझ, आई market, that गॉट योर brand पॉइंट. and all, आई गॉट योर right? पॉइंट. आई गॉट योर पॉइंट. And कौन कौन है मतलब गिन भी सकते हैं. ठीक है, नीमार है, राइट, रोनाल्डो, एम्बापे, एम्बापे, मेसी. मेसी, ठीक है, इन द बेल लास्ट बेल आई एम बेल भी, टॉकिंग लास्ट 5 इवन years. गैरेथ बेल, इवन गैरेथ बेल. Gareth Bale, I think Haaland was maybe हाँ, could have been that but player. no, But but problem Haaland had a presentation, if you remember. they might have had, not denying that, but it was not big and known and all. Point is, he could have been that player, but Norway is a very small country. France हाँ, is a very big country. but you triggered my memory. Haaland had a very big presentation, if you remember. Was it a very big one? I don't remember. It Like there was a different presentation for him. I'll share you the video. If you'll jog your memory. You'll jog your memory. You'll understand. एक हुआ था presentation, like they were like presenting him. He just came for that presentation. Like अलग scenario था. It's not like middle of a game, हाथ वाथ ताली मार के चले गए, ऐसा scene नहीं. अच्छा. जैसे प्रीमियर लीग में होता है. हाफ टाइम में उतार के, you understood ना प्रीमियर लीग में कैसे होता है. राफा अल्वारान आया था यूनाइटेड में, रियो फर्डिनेंड, वी मस्ट नॉट लूज, कुछ ऐसा कुछ बोला था. यू रिमेंबर, यूनाइटेड ऐसा बोला था. लाइक हालैंड का अलग से प्रेजेंटेशन हुआ था. नाउ आई रिमेंबर हालैंड हैड अ बिग प्रेजेंटेशन. बट उसका प्रॉब्लम वही है ना कि इज प्लेयर, नेशनल टीम उसका बहुत कमजोर. Player? नॉर्वे नेशनल टीम उसका बहुत कमजोर है. दैट Correct, डजंट yeah. लाइक compete in big competitions जहाँ पे हालैंड बनेगा बैलन डी और विल compete with एम्बापे एटसेट्रा. मुश्किल है, मुश्किल है. And one more thing is they may even compete, but just the number of people in Norway are less, right? The number of people in France are correct, more, correct, and correct. and also France's previous performance makes more global, like makes France have a bigger global fan base than say Norway, right? So that is that. True, true, true. और कोई प्लेयर मैं ऐसे सोच नहीं सकता. हाँ, कैसेमीरो एंड वरान probably and Thiago Silva were big players, I guess, in the game. But in terms of like in terms of sheer like ऐसे जलवा है ना, तो वो ऑनेस्टली कैसेमीरो, वरान और सिल्वा का इतना जलवा नहीं था. ठीक है, लाइक that glamour isn't there about them. They are good and like seasoned, experienced, very well. Matlab they have played, they have won many things, so on and so forth. But they aren't like a Neymar or a Messi, you know, or a Ronaldo. Like true. Like Neymar for that matter, ठीक है. He may not be the best goal scorer or मतलब उसकी ट्रिक्स वगैरह काफी अच्छे हैं. He's a very good player, no doubt.
बट ऑफ कोर्स वो मतलब एक लेवल कम है, आई वुड से इवन एम्बापे से, ठीक है, राइट, बट ही स्टिल हैज दैट लाइक दैट एक्स फैक्टर अराउंड हिम, right, and and mostly all the big players have been made in the Premier League. De Bruyne हो गया, करेक्ट, ठीक है, ट्रू ट्रू, अपने पुराना पूरा जनरेशन, ड्रॉगबा, लैम्पार्ड, ये सारे हो गए, yeah. रूनी हिल, Gerrard, ये, Scholes, हाँ, Giggs, या etc. एग्जैक्टली ऑल दीज गाइज, फॉर दैट मैटर इवन लाइक योर आर्सेनल गाइज, राइट, ऑनरी, विएरा, Patrick Vieira. Oh yeah, हाँ, yeah, very big players. but largely they came as again not a glam player, and they became that glam player Glam player, yeah. in the Premier League, है ना, तो उनके लिए मतलब प्रेजेंटेशन इतना हो नहीं सकता Correct, है। correct, correct. But वही like last में like if I can remember Haaland ही था that जिसका हाँ presentation हुआ था Premier League में. उसके अलावा like last Haaland ठीक है, Haaland is Haaland, but like at that level Neymar level कुछ हुआ नहीं है Premier League में, वैसे transfers हुआ नहीं. That's हाँ very true यार. ऐसे transfers हुआ है only to La Liga और League One PSG में गए. या Yeah, like that's the fact ना, यही हुआ है. Okay, let's talk about the upcoming season. Okay. PSG looking to offload one striker. Okay, offload क्यों, they because have what are already sent Kylian Mbappe, right, like he's leaving, not sent. no, they have their strikers, no, Gonzalo Ramos, etc. है ना. Hmm. They're looking to offload one striker to accommodate another striker. Okay, they're gonna sell Gonzalo Ramos and or Colomboani to accommodate one big signing striker, which कौन है ये is big a like signing? very वही वो पता नहीं चल रहा है, but that's the news. That's the news. Okay, they're gonna offload one of the strikers. Either it will be Colomboani or Gonzalo Ramos. And for the fact, Gonzalo Ramos was signed like last 1 or 2 years. Like Colomboani, तो I think was बहुत साल से. Gonzalo हाँ, Ramos, I think he was signed after the World Cup. Hat-trick मारा था अच्छा, 2022 में. I think after that he was signed. But let's see क्या होता है. Next scenario is like ये तो हो गया, एम्बापे ट्रांसफर हो गया. so before you Like continue, let's yeah. before you continue, that big striker, do you think it's going to be Victor Osimhen or Romeo Oh, Lukaku? sorry. I think it's Victor Osimhen. Yeah, The I think it rumors will. are Victor Osimhen. You're right, Victor Osimhen. I So think like it will be Osimhen as well. yeah. So the fact is they have to offload one striker और FFP में गांड मर जाएगा. ठीक है. So they'll have to offload one striker. And with Chelsea, Osimhen का with Chelsea का scenario है ना. He has some like clause and etc. है ना. Chelsea will bid only जब इन लोग clause कम कर दे. हाँ, Chelsea and are I think open to bid, but वो महंगा भी है, और अभी मतलब I don't think I don't Chelsea like for requires. Chelsea. I think like Nicholas Jackson है, Armando Broja है, and who else is there? I think that's about it. Striker में हम या बट कोल पाल्मर गोल कर लेगा और कोई जरूरत नहीं किसी गोल पार्लर, को. गोल पाल्मर गोल कर लेगा. बट लाइक इट्स गुड. बट निकोलस जैक्सन खराब क्या, ही स्कोर्ड आई थिंक 15 गोल्स ना प्रीमियर लीग में लास्ट सीजन. but he missed too many. So आज ही मैं देख बट रहा था, right? So बट आई उसका टेल यू ना, उसका एक हाँ बट सेकंड, 15 गोल्स लास्ट टाइम कौन से चेल्सी प्लेयर ने किया था. कोल पाल्मर छोड़ो, लास्ट Eden 3-4 Hazard इयर्स has में. been that person. Okay, Eden Hazard ईडन ने, हैजार्ड एडन हैजार्ड भाई कितने साल पहले, उसके बाद किसने किया 15 गोल्स भाई, but वो तो देखो एक यार. minute, no no, eight, you're when you're scoring 15 with an 18 plus xg, that's the problem. The problem is not scoring 15 goals, ठीक है, the problem is you're missing many easy chances. So he would actually करेक्ट. be a very good player if he converted those easy chances and maybe not scored. I mean, and maybe missed some of the more difficult ones. But he's ओके, missed many easy chances. आई विल टेल यू टू सर्च वन थिंग. ठीक है, हाँ, ड्रॉगबा का प्रीमियर लीग में हाईएस्ट पता है गोल्स. 12 गोल मारे थे पहले सीजन में, एंड आई नो आई डोंट, दैट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग ना. फर्स्ट सीजन की नहीं, हाईएस्ट उसका गोल्स आई थिंक 18 19 ना इसका टैली हाँ हाईएस्ट, और ऐसा ही कुछ 15 है, भी हो 18 सकता है. 19, इट्स वेरी बट नॉट वेरी हाई. ठीक है, बट बट ड्रॉगबा दैट का डजंट गोल्स मैटर. क्रूशियल सिचुएशन में था ना, वो तो अलग है. एग्जैक्टली, आई एम नॉट ये कंपेयरिंग मैटर विद करता ड्रॉगबा. है. मैटर वो नहीं करता है बट कि कितने मारे, मैटर करता है कि जब जब मारना था क्या तब मारा है, विच करेक्ट निकोलस ना, जैक्सन हैज नॉट डन. ओके, वही हैट्रिक, स्पर्स के साथ हैट्रिक किया.
Marquinhos had like 10 man Spurs था bro वो, and they were like you have seen that match. You have seen that match. सबको पता है. Second half सबको पता है. भाई you Postecoglou भाई अलग ही बकचोद आदमी है भाई. You remember exactly. that match? 10 man down, हाँ, all and out he attack. भाई all out attack, and then the defense line was at half line. Okay, the last defender was at half line, and they were trying, and he was trying to beat the offside trap basically. Point but मैं अभी भी बोल रहा but हूँ. उस मैच में इस मैच में कितनी बार ऑफसाइड ट्रैप बीट कर पाया आउट ऑफ हाउ मच वो भी क्वेश्चन है. 10 गोल मारता उस मैच में अगर ऑफसाइड ट्रैप बीट कर पाता. उसने बेचारे ने 2 गोल और मारे. वही हुआ ना. लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वो भी ऐसा सही बोल रहे हो. तो लाइक बट अपॉर्चुनिटी 10 गोल की मैं थी. मानता हूँ, मतलब पोटेंशियल है, ठीक है, हाँ हाँ. yes, potential is there, but he has to soon realize it and start at least scoring the easy one. But I'll tell you, Nicholas Jackson was never that like high scoring player. Like La Liga में उसका record देखो उतना high scoring नहीं. But coming to Premier League in the first season, 15 goals in Premier, I think is a very big achievement. उसका उतना गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड है ही नहीं. तुम देखोगे ना ला लीगा एंड एटसेट्रा में, इज अ यंग प्लेयर एटसेट्रा, वो सब चलता है, ठीक है. बट कमिंग टू प्रीमियर लीग, 15 goals in the first season is a very big thing, I believe. He It has is. scope for improvement. He has scope from improvement. Hat-trick against Spurs is also a very big thing here. Tell me, हाँ. there have been many times when Spurs and many other team have gone to 10 men Correct, down, correct, okay, in correct, the correct. first half. Does that mean As we had discussed in our watch along, आज के दिन में 10 man down is not very big thing against opponents. correct? They are like But so much prepared. आजकल गोल मारना हाँ, बहुत मुश्किल है 10 man against 10 वही man. वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी टीम्स हाँ. 10 मैन डाउन चले जाते हैं, फर्स्ट Correct, हाफ में correct. 10 मैन हो जाते हैं, मेनी टाइम्स दे बिकम हाँ. 9 मैन आल्सो, 2 रेड कार्ड्स मिल जाते हैं. Correct, How correct, many correct, players end up scoring hat tricks? I'm not saying it's a easy deal, ठीक है, correct, but correct, correct. that being said, I think अगर वो जो easy chances आ रहे हैं, मतलब to look, which look easy at least to, I know that if I'm not in a position to score those goals, मैं तो अभी भाग भी नहीं पाता हूँ, but It's okay. as a professional player, I mean, if he is putting away those easy ones, then I think like we have like solid this thing, and I think the manager see it, right? इसलिए उसको continuously खिला रहे हैं, इसलिए खिलाया अल्माडो को वहां obviously. को भेज दिया, right? इसको क्यों नहीं भेजा और इसको क्यों स्टार्ट किया? Correct, क्योंकि correct, उसमें सब कुछ correct, दिख रहा है कि पोटेंशियल है, बट उसको खुद रियलाइज अभी मतलब करना चाहिए. correct. आज फ्रेंडली चल रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड क्यूपीआर का. आई जस्ट वांटेड टू चेक द स्कोर, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग इनटू माय फोन. और दो तीन फ्रेंडलीज चल रहा था आज प्रीमियर लीग का. इफ वी कैन गेट द रिजल्ट. ओके ओके. यूनाइटेड हैज वन अगेंस्ट क्यूपी ग्लास सॉरी क्यूपीआर का स्पर्स के साथ चल रहा था, रेंजर्स के साथ यूनाइटेड का चल रहा था. ओके. अच्छा. यूनाइटेड हैज वन 2-0 अगेंस्ट रेंजर्स. गोल स्कोरर्स कौन कौन है नहीं दिखा रहा. गोल स्कोरर्स क्यों नहीं दिखा रहा? ओवरव्यू पर नहीं. For some reason goal scorers नहीं दिखा रहे. You can search, that's different. For which match? United QPR, sorry, United Rangers. Rangers. United Let was me the tell you. Rangers. Huggill and Amad Diallo have scored. Mason Mount और assist. कौन Huggill कौन है? जो Huggill, I don't know कौन है. Oh, Huggill United. And for QPR and Spurs, QPR and Spurs. And Spurs, Yves Bissouma has scored and assisted by Kulusevski. Yeah. And Dane Scarlett assisted by Mickey Moore. Who? Mickey Moore. मैं भी Mickey Mouse पढ़ गया था एक सेकंड के लिए, but Dane That's also Scarlett, 2-0. That's also 2-0. That's also 2-0 full time. 2-0 full time. Okay, nice. हाँ, चेल्सी का भी है. Like Chelsea won against Preston or someone 4-0 recently. Recently क्या? तो उसमें देखना चाहिए वो वाला स्कोर. Broha, I think, scored a brace or something. Chelsea, search करो Chelsea latest trend. कर रहा हूँ. Chelsea versus Preston, I think. Chelsea versus Preston was such. Chelsea versus Bournemouth. नहीं यार, Chelsea versus Wrexham is coming up. हाँ, coming up. और कुछ हुआ था recently. वो official friendly है.
official first friendly है, Wrexham वाला official first friendly है, हम्म तो बाकी तो नहीं हुआ है शायद, मतलब वो अनऑफिशियल जिसमें कुछ जिसमें game- हाँ जिसमें जिसमें रायन रेनॉल्ड्स will play the striker as Deadpool. सॉरी जिसमें जिसमें रायन रेनॉल्ड्स will play a striker as Deadpool. False nine. हाँ False nine play. Yeah, let's talk about the upcoming seasons for each of the leagues. Okay, So let's before start you with Premier continue, League. Okay. just a small thing inside. Chelsea haven't lost in the last Yeah. 6 matches, and Wrexham haven't lost in the last 5 matches. Oh, very big competition for Chelsea. As things are going, this is a very big competition. So in future, it will be a very big rivalry, I believe. As Chelsea are going, as Chelsea are going through if Chelsea goes the same way they have gone last 2 seasons, Wrexham and Chelsea was the biggest rivalry, which we won't be able to watch in League One or League Two because EFL Championship or EFL League One is not featured in India. But You have to go for illegal streams like Copa. we are playing in that Europa Conference League, है ना? Yeah, Conference League. Yeah, Cold Palmer will be the player of the decade for that. I think. What I But believe. I think it will be it will be interesting. If as we have as I mentioned once. Hey, in the let's summarize. Let's do this. No, summarize now. Summarize the. Let's start. Let's start with the Premier League. ठीक? We're gonna go for league. Let's start with Premier League. Okay. So the first fact is Chelsea will play the Conference League. That's a very big thing. मतलब so एक तो याद है मतलब we won the Champions League next season. We were in the Europa after group stages. Europa League, and we won that. And we won that. जीत गए. जीत गए. And the Chelsea was the first team to hold Europa and Champions League at the same time. अलग ही record. कुछ भी record था, but ठीक है था. Okay, I think this is also going to be. I mean, I'm obviously not saying कि out and out we are going to win, but of course, अच्छा मतलब chance. No. If Chelsea wins, they'll be the first team to win all the 3 European. हाँ, exactly. कोई भी बेकार से record ऐसे बन जाएंगे. ठीक है. It's a slightly irrelevant record, but it's a record nonetheless. Also to be a trophy nonetheless. They'll hold. दो तीनों जीते. Yeah, that will be a very very big. Mourinho has already had this as that video. Mourinho already has that. First winner, na? Yeah, first manager to win all the 3 trophies. He won it with Roma, na, Conference League. Correct. He won Europa with I think किसके साथ Europa League? Oh, I think Porto के साथ किसके साथ जीता? Europa तो जीता था. Oh, United. Sorry, United. Yeah. United. He won it with United and Champions League, of course. Inter Milan and FC Porto, yeah. So he's the first manager to win all the 3 cups for European. Chelsea, if they win, they'll be the first club to win all the 3 European trophies. Yeah, go ahead. No, so I was just going to say that so it's actually good that we're playing in this. एक तो चैंपियंस लीग और ये सब जैसा हाई स्टेक्स नहीं है कि मतलब एवरी अदर मैच इज लाइक अ लिटिल बिगर कि जीतना ही है टाइप्स एंड नहीं बड़े टीम है तो तुम्हें अपना फर्स्ट टीम उतारना है. So I think the Conference League is a good chance to get this very big squad that is being accumulated at Coben, है ना? A chance तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से कि 4 कॉम्पिटिशन्स है. कॉन्फ्रेंस हो गया, कार्लिंग हो गया, सॉरी कार्लिंग इज व्हाट आई विल कॉल इट. मिकी माउस कप. हाँ नहीं लीग कप है, बट जब बचपन से देख रहे थे इट वाज कॉल्ड कार्लिंग कप. It's कार्लिंग कप, but it's called Mickey Mouse Cup right now. But नहीं यार, I think it gives a good opportunity. Plus FA Cup now Premier League. चार कॉम्पिटिशन्स में रहना चाहिए अगर बड़ा स्क्वाड है, राइट? तो सबको मतलब ऐसे रोटेशन में चांस भी मिलेगा खेलने का. होपफुली दिस मैनेजर रोटेट्स, so I think it's good. I actually wonder what do you think? Will we finish top 4, top 6, top half? क्या लगता है? New manager. I believe top 4 नहीं होगा, top 6 I believe. Europa इस बार खेलेगी. Conference खेलेगी, but I think Europa should be comfortable because last season किसने expect किया था we'll finish what we have finished. How we started, how we were in the middle. Last में कुछ miracle ही हो. Correct. Last में
Pochettino, like everything came together. That's what I was like against, like Pochettino ko hatane ka against. I was that everything like he told the process fell in place at last. हाँ, और जब प्रोसेस फेल इन प्लेस ही रिमूव, दैट वाज वेरी उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया. That's very, I felt that was very stupid. हाँ, उसको थोड़ा निकालने का सीन कोई है. मैनेजर एक तो पकड़ो और उसको टाइम दो, पता है. Correct, एंड correct. पोचेटिनो आई थिंक इज अ गुड मैनेजर, एटलीस्ट प्रूवन ओवर मल्टीपल इयर्स, शुड हैव हाँ, बीन प्रूवन, गिवन. प्रीमियर लीग प्रूवन भाई, प्रीमियर लीग प्रूवन. जो बंदा स्पर्स को लेके चैंपियंस लीग फाइनल ले जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है. वो कुछ भी कर सकता है. आई थिंक पोचेटिनो को मिलना चाहिए था ये सीजन, आई डोंट नो क्यों हटा हाँ, दिया है. नो, लाइक एक दिन पहले ही we had a dinner with Todd Bowley. He's हाँ. like, we believe in his process, etc. अगले दिन कुछ घंटे बाद ही निकाल दिया उसको. हाँ. What the fuck, bro? What the fuck? Like, ये सब मतलब what the fuck? We have already हम्म. like discussed, but like कुछ तो है यार, प्रोसेस को बिलीव करना चाहिए. ठीक है, मैरेस्का आया, बट आई थिंक हम्म. मैरेस्का के साथ भी लाइक यू शुड स्पेंड टाइम. उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए. आई बिलीव या. उसको अगर स्क्वाड दे रहे हो, यू गिविंग द स्क्वाड, गिव हिम सम टाइम ना. उसने भी तो भाई लेस्टर के साथ लीग जीत के लाइक आया है. ठीक है, उतना उतना लाइक वो नहीं है, बट स्टिल इट्स थिंग ना. ही हैज वन द लीग चैंपियनशिप, बट वो तो कंपनी भी जीता था. वी नो व्हाट कंपनी डिड उसके बाद विद द बर्न. हम्म. बट वो अलग बात है. ही हैज अ डिफरेंट टीम, ही हैज डिफरेंट बजट, वो तो अलग सी. सो आई बिलीव लाइक Chelsea will finish top 6 Europa League तो खेलेगी. But okay, the latest transfer rumors Chelsea का, Chelsea are looking for a goalkeeper to हम्म. compete with Robert Sanchez. But I'm not sure like why they are not considering Petrovic. Petrovic was very good. वेरी गुड, या. एंड Petrovic was like very good last season. जितना भी खेला like सैंचेस के इंजरी के बाद, आई थिंक ही वाज द मेन गोलकीपर. जो भी खेला मैंने जितना भी देखा है, ही वाज अ वेरी गुड कीपर. सब बोल रहे हैं पैर में थोड़ा वो लाइक विद हिज फीट एंड एटसेट्रा, बट आई फेल्ट ही कुड सफाई. उसको थोड़ा डेवलप कर सकते थे. ही इज वेरी यंग. उसको शुड हैव चांस दे सकते थे. दे सकते थे चांस. क्यों? आई थिंक ही इज अर्नड हिज प्लेस इन द टीम एंड शुड हैव कंटिन्यूड. हाँ, ट्रू, 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 दैट्स वेरी आल्सो ट्रू. बैड की ऐसे ही. अभी देखो, करेक्ट, करेक्ट. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ना ये मरेस्का के सीन से के साथ जो ग्रैम पॉटर वाला सीन हुआ था ना, वो लग रहा है मुझे. ठीक है. आई मीन आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू लाइक ईट माय लेट वर्ड्स. हिम गो. नहीं, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू ईट माय वर्ड्स इन द फ्यूचर. या, बट मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि ग्रैम पॉटर टाइप्स वाला सीन होने वाला है. नॉट हो सकता है, हो सकता है. राइट, नॉट प्रीमियरली प्रूवन. जो स्क्वाड था, मतलब जो अच्छे चीजें या, थे या, स्क्वाड की, लाइक पेट्रोविच एंड ऑल, उनको ही करेक्ट, हटा रहे करेक्ट. हो. He's only एंड he's कोई he's कितना only भी two qualifications to he's only two qualifications to be a Chelsea manager. He's a bald Italian mafia. That's it. बट कोई कितना भी वो हो जाए, कुछ भी बोल ले, मेरे हिसाब से अभी भी इन टुडेज डे एंड एज एंड इन द फ्यूचर, until unless the goal post size is changed or reduced, you will need a tall goalkeeper. ठीक है, जो सैंचेज नहीं है और जो Sanchez, पेट्रोविच nahi, I है. don't believe in Sanchez. I don't believe in Sanchez. Petrovic, हाँ. that's true. But they're looking for a very good goalkeeper. What I've heard is Kepa will come back, but he'll go to Real Madrid as a permanent deal. ठीक है? Because I believe Lunin है ना? You know Lunin, what he did for Real Madrid ना? Like when Kepa went to हाँ. Real Madrid as a loan, Kepa हाँ. उधर भी first keeper नहीं था. You've seen that ना? He was the first keeper if he went on loan to replace Thibaut Courtois. He played as a first keeper in couple of matches. उसके बाद Lunin था. Lunin played the हाँ. Champions League final. हाँ. So I believe they're not, Real Madrid is not keeping Lunin as the first keeper. He'll be moved. He's looking for some other move. Okay. And I'm not sure like Kepa will become as a backup keeper, but he's keen to move to Real Madrid. But Lunin is a good choice, I believe, but I don't think Chelsea are behind Lunin. Your rumors है. So I'm कोई not sure who are they behind. कौन सा गोलकीपर अवेलेबल है मुझे नहीं पता. या कोई फायदा भी नहीं है, मतलब because when you had Petrovic played a really good season, I think यार मतलब चांस देना चाहिए. नहीं तो ये सेम डीन हेंडरसन वाला सीन हो जाएगा, like what happened with Manchester United and Dean Henderson, right? That's very Had a very extremely good season, I think, with Sheffield, you know, हाँ, right? Went yep, back to yep. Manchester United.
De Gea is amazing. I'm not going to Replaced. deny that. Whatever, not Correct. amazing, but like he was definitely in the top 5 keepers in the world for a long period of time. Which I think, okay, which is actually amazing. Top 5 in the world, not even in the Yeah, Premier yeah, yeah, yeah. League. Um, uh, but वही हो जाएगा like अभी at least there they had De Gea. Here though we don't have anyone and we're still getting rid of it. It is extremely True, silly, you true, know. true, true. नहीं, Uh, I like if you have come to topic of डेया के बारे में पूछना चाहता हूँ. uh, लाइक ऐसा कोई प्लेयर देखा है एक साल मतलब फ्री एजेंट होके कोई क्लब में ना जाके, लाइक क्या सीन है उसका डेया का? I think पैसे व्हाट इज द एक तो सिनेरियो? पैसे है ठीक है मुझे 3 चीजें लगती है पहली चीज हाँ, पैसे हाँ, वेजेस उसके हाई होंगे किसी को 30 प्लस प्लेयर को इतने हाई वेजेस नहीं देने ठीक है नो मैटर इफ देयर अ कीपर बिकॉज उसका मे बी लाइक फ्यूचर इन रिटर्न नहीं है राइट दे कांट सेल हाँ, हिम हाँ, ऑन रिटर्न हाँ, दूसरी बात यह है कि एज आई हैव एज यू नो लाइक एवरीवन इज ट्राइंग टू प्ले दैट वोक फुटबॉल दीस डेज प्ले विद देयर फीट एंड ऑल Daya isn't one of those guys okay he's a या proper ट्रू, stopper ट्रू, yeah. ट्रू, He's actually not even that good at gathering he's a very good short stopper करेक्ट, okay करेक्ट. तो वो दूसरी बात होगी and the third thing of course like he himself would be very choosy about where he goes what he does right ट्रू, ट्रू. uh, आई थिंक या तो या वो कोई ऐसे मतलब वो it comes along with the wages but let's assume that Wrexham somehow for example are willing to meet his wages he's not going to go and play for it या right he'll obviously want to मतलब not obviously but I'm presuming this कि मतलब ये इसका reason होगा right कि वो कोई he wouldn't want to go to championship or whatever like Edgar Davis Sol Campbell type you know they just went wherever they सो got they yep, just wanted to yep. play So do you think we'll see De Gea till December in any club? I don't think so. I also don't think so no. I think his football career is done. He'll like And focus on I different think things. one more thing is again Dare is a short keeper ठीक है so till now he was young okay so वो he could make up for the lack of height or not just short like he's a smaller side he's not a Portua Ah, yeah, or a not Oliver like Kahn yeah, like a big correct, 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 imposing keeper correct. ठीक है so Uh-huh, till now uh-huh. with his age he had high athleticism and could make up for all of that okay uh, अभी वो बूढ़ा भी हो रहा है so, like, see your Khans and your Buffons and all could play because even if they got old, Noyers, they were like little big and imposing, you know. बड़े थे वो लोग मतलब they were like little Correct, 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 gigantic compared to correct, others. They is not correct, like correct. तो ये भी एक फैक्टर मेरे हिसाब से हो सकता है like at least these are Yeah. factors I would think and Even consider. yeah, even Casillas at his like at the end of his career he faced so much the same thing. Like that's Yes. what he was replaced from Real Madrid. So near post में miss कर रहा था. Like that was not expected from Casillas. Like at age हो गया था like 30s like ये टाइम के बाद ये reflex कम हो जाता है. ये रिफ्लेक्स टाइम के कम बाद हो जाता reflex है कम. yeah and those players which are not big right like Yeah, Casillas was not big. they Casillas 5'11". He's not even 6. exactly so they तो depend on problem their हो जाती है. reflex more they depend Correct, on their correct, timing correct, much more okay correct, जो correct. बड़े वो players है save मतलब करता था यार. Correct. ब्लॉक बन जाते हैं बट ये लोग को No. पहुंचना पड़ता है जो छोटे से पहुंचना करेक्ट करेक्ट कसियस का राइट वही सीन हो गया था लाइक मोरिनियो लाइक बेंच या बट आई एग्री वही होता है ना एज के बाद इफ यू आर नॉट बिग एंड एवरीथिंग एज अ गोलकीपर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं यू हैव टू कवर द गोल पोस्ट या वेरी डिफिकल्ट थॉट्स ऑन मेसन माउंट एट यूनाइटेड क्या लगता है इज ही एंड काई हावर्ट्स एट आर्सेनल लाइक आई थिंक वी शुड compare both of these both started off as dud little bit है ना I guess Kai Havertz has picked up more than Mount, या but मेसन माउंट not या maybe not much more. What do you think about? मतलब क्या लगता है? Do you think he will succeed there? Do you think something else will happen? Um, काई हैवर्ट्स का सीन वही है ना लाइक अभी सब लोग उसको स्ट्राइकर ही खिलाया जाता है his main position was CM ठीक है उसके बाद like he played false hmm, nine ना and he got a success in hmm, Chelsea तो hmm, उसके बाद everyone is playing in the same position and I hmm, feel for Kai Havertz it's very like difficult for him to succeed as a like full on striker जो Germany में हमने देखा he was playing a striker right hmm, it's very difficult because that's not his natural position ना he's like a hmm, playmaker or he's a CM अब उसको makeshift बना दिया है like because he's tall and etc
doesn't mean he'll score every time, right? करेक्ट, हाँ वही प्रॉब्लम मुझे वही हो लगता गया है। ना, लाइक मुझे भी वही हम्म, लग रहा है, लाइक चेल्सी में यार he scored the most important goal in last 5 years, of course. Respect for Kai Havertz for हाँ that. एंड असिस्ट किसने किया वो भी देखना पड़ेगा, मेसन माउंट दोनों अब चले गए। सो मच ट्रांजिशन यार, लाइक लास्ट 3 इयर्स में क्या हो गया चेल्सी में, वही सोच रहा हूँ यार, हम्म, पूरी टीम ही बदल गई। ठीक है, रूडिगर चेल्सी में छोड़ो यार, हाँ वो अलग बात है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट या आई बिलीव यार, हैवर्ट्स ना, लाइक इट्स मोर ऑफ प्ले मेकर, ही इज मोर विद हिज फीट, इट्स नॉट ही इज अ फॉक्स इन द बॉक्स, ही इज अ टारगेट मैन। फॉल्स नंबर 9 हम्म, वैसा नहीं है, ही इज नॉट दैट प्लेयर, ही इज द सीएम, he can do more with his feet, but वही है ना भी, लाइक क्या कहते हैं, लाइक जैसे मूवी में टाइप कास्ट हो जाता है, he has been typecasted as like that tall player, he can play, he's a versatile player, but we play him as a striker or मतलब CF, the old CF position. actually I was thinking that only he should have actually been the old CF position, which is Yeah, maybe not but exactly striker, uh, correct. like Roberto Firmino types, but Yeah, yeah, uh, yeah. Not but false number 9, not the striker, exactly the middle one, CF, सपोर्टिंग स्ट्राइकर टाइप्स है ना, वो supporting striker, सपोर्टिंग yeah. स्ट्राइकर है। आज के जमाने में वो that's the second striker, yeah. हाँ एसएस नहीं, एसएस है वो आज के जमाने बट वो हेवीली डिपेंडेंट है, इट इज व्हाट आई फील, ऑन द विंगर्स हु आर प्लेइंग में। एंड करेक्ट कटिंग इन। करेक्ट करेक्ट Firmino, for example, was fabulous at Liverpool, but it was because Salah, Firmino, and Mane all three complemented each other. Salah वो without दोनों नहीं, वो दोनों नहीं, यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट वही, रॉबर्टसन एंड अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एज वेल ना, विंगर ही खेलते थे हाँ वो लोग, वो भी जस्ट थे, थिंक ऑफ ए फ्लिप बैक, करेक्ट, क्या ये वो। दोनों विंगर विंग बैक से विंगर आ हाँ जाते थे, हाँ एंड हाँ वही, these guys used to cut in and this guy used to drop little back, okay। तो करेक्ट ये करेक्ट करेक्ट। पांच लोग थे, वो सिस्टम में बहुत बढ़िया बैठे थे, ओके, एंड दे ऑल कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। जैसे ही वो करेक्ट चले गए, मतलब यू सॉ दैट इट वाज नॉट द सेम, राइट, एज या सून एज या, दे वर। लाइक एज सून एज फर्मिनियो वेंट ना, फर्मिनियो वेंट, फर्मिनो एंड माने बोथ वेंट। हाँ एक साथ ही गए, बट लाइक आंख में पड़ा यार, लिवरपूल का मिसिंग है, लिवरपूल का मिसिंग है, एंड देन ट्रेंट lost his place and lost his form and lost his place in the team, the England team. हम्म, And Liverpool team maybe I don't think he'll get his place. I'm not sure. Like Arne ही slot क्या देख प्लेस रहा है? बट ही प्लेस बट वो जो वो दो तीन सीजन का वो Impact, जो impact, था ना, इम्पैक्ट impact था था, वो, impact exactly. तो वो आई गेस वो रॉबर्टसन का इज स्टिल देयर, बट ट्रेंट हैज But गॉट। but I think Robertson was injured last season बहुत time, और Trent was इतना injured. याद Some नहीं। of them was injured. But उतना impact दिखा नहीं. For a common हम्म, man जो प्रीमियर लीग के लिए ट्राई फॉर ऑल द मैच, उसमें इम्पैक्ट हाँ, दिखा नहीं। वो सो वो दो तीन, सॉरी, बोलो बोलो, या टेंथ, ये मैं बोल रहा था, वो जो दो तीन साल थे ना, हाँ लाइक जस्ट बिफोर ऑल ऑफ करेक्ट दिस ही करेक्ट, डाइड। लीग जीता, चैंपियंस लीग, दोज 3 सीजंस वही, इंपॉर्टेंट, वो लोग कप वो कमिंग एंड एवरीथिंग। दैट वाज incredible, and these five या guys. But since we are talking about just Firmino's role, that's why I was saying it depends a lot on that the wingers who are coming in, or whoever is the other support players. So I think Havertz would fit well maybe in that kind of system. लिवरपूल करेक्ट करेक्ट, वो ऐसे सिचुएशन में फिट करेगा, बट But एवरीवन उसको डजंट प्ले द मतलब सेम एक तो टैक्टिक्स। उसको हाइट की वजह से स्ट्राइकर बना रहे हैं, which is funny because I don't, मतलब he must have scored, but I don't remember him scoring a header goal, a headed goal, for that यूरो matter. में किया मैं है, दिस यूरो आई एम नॉट श्योर, दिस यूरो में किया किया था। होगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ मुझे मतलब याद नहीं। इट्स नॉट लाइक वही है ना, मेमोरी लाइक में तुम्हें एक बार में याद नहीं आएगा, वही, हेडर स्कोर्स ही, मुराटा का याद आएगा, मुराटा का हाँ, बहुत सारा याद आएगा, यू विल मुराटा नॉट के, रिमेम्बर लाइक, जीरू के याद आएंगे, या ड्रॉगबा के याद एग्जैक्टली, आएंगे, ड्रॉगबा इज याद है, यू इट्स नॉट लाइक वेरी लाइक वीक स्टेज में ऐसा कुछ किया है, हाँ, लाइक हर मैच बहुत मैचेस में किया है, या, लाइक एंड रिमेम्बर ना मोराटा चेल्सी, लाइक फर्स्ट फ्यू मैचेस एस्पिलिक्वेटा एज मोराटा हेड, हाँ याद है मुझे। मोराटा लाइक चेल्सी में फर्स्ट सीजन में स्कोर्ड आई थिंक 5-6 goals in the initial stages with only हाँ, headers, you remember that, हम्म, है ना, तो वही मतलब वही क्या मैं बोल रहा हूँ, इम्पैक्ट उतना नहीं, हाँ and or it's little memorable, like when it happens multiple times ना, वो थोड़ा याद रह जाता है। जैसे हैजार्ड का, ठीक है, we know that he's dribbled, he may not have scored all goals by dribbling through 10 players, but he's done it 2 3 times, so we know that कि मतलब ये हैजार्ड गोल मारता है, ठीक है, बट इसका हैवर्ड्स का मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है।
and I feel like ऐसा the you one Havertz was in Chelsea for 3 seasons if I'm not हाँ wrong. 2 और हैजर्ड, हाँ, लाइक फर्स्ट 3 सीजन्स में हैजर्ड के ने जो इतने सीजन में एक सीजन का जो हैजर्ड ने किया तो वो कर देता तो हैवर्ट्स मान जाता। हम्म जो एक सीजन में हैजर्ड ने किया लाइक फॉर ऑल द सीजंस दैट ही हैज बीन चेल्सी, एक लाइक वर्स्ट चेल्सी हैजर्ड का वर्स्ट सीजन में जो हैजर्ड का हम्म परफॉर्मेंस है वो हैवर्ट्स एक सीजन में कर जाता तो मैं मान जाता। हम्म लाइक इट्स वेरी लाइक वही है ना, डिफरेंस इम्पैक्ट डिफरेंट है। लाइक Havertz is not that player like that Chelsea was expecting that to, but like चला गया like yeah it's okay. And Chelsea का मुझे ये पसंद नहीं आता, they sell their like best of the players to their exact rivals, direct rivals. हाँ you should ना it's आर्सेनल okay में to सब चले sell जाता है, हाँ it's okay to not sell at but their you should peak not ना, sell to not the at the peak, main rivals हाँ not at their peak right. विलियन को भेजा बहुत बढ़िया पीटर चेक को भैया बहुत बढ़िया किया, ठीक है, बस वो लाइक बुड्ढे हो गए थे। बट यार हैवर्ट्स, जॉर्जिनियो, डेविड लुइस भी छोड़ो, हैवर्ट्स इज वेरी यंग, वो लाइक मुझे लगता है ऐसा, हैवर्ट्स, बट वो ही हो जॉर्जिनियो जाता है छोड़ो। मतलब यही हो जाता है जो चेक के साथ बेसिकली हुआ था। एक तो ये प्लेयर्स लंदन प्रेफर करते हैं, ठीक है, वंस दे स्टे इन Yeah, लंदन because लाइफ। they prefer London because उनका बच्चा बच्चा, हाँ even in fact the rumors था ना Thiago Silva will go to Arsenal because he prefers London, but Thiago Silva being Thiago Silva, of course हाँ Thiago Silva भाई, respect for him, we went back home, but Thiago Silva भाई अलग ही respect है मेरे लिए, but like he's like not respected as much I believe, क्योंकि उसका ना लाइक चैंपियंस लीग जीता उसके बाद फुल इतना दो गंदा सीजन गया, he doesn't deserve that, हम्म ही डिजर्व अ बिट मोर यार। थोड़ा गंदा सीजन इतना ट्रांजिशन में आ गया ना, वो थोड़ा पहले आता ना लाइक चेल्सी बहुत कुछ हाँ जीतती वो याद रहता सबको यार, थियागो यस सिल्वा वाला एग्जैक्टली। को लाइक उसको, बट उसका यार अंडरशैडो हो गया ना फुल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि दो इतना गंदा सीजन गया ना इसके बाद, वही वही बुरा लगता है। बट थियागो सिल्वा इज रेस्पेक्ट भाई, लाइक ही इज अ लॉयल्टी टू द इन्फिनिटी भाई, जिस क्लब में रहता है रॉयल रॉयल, या वही वो, हाँ वो एक प्रॉब्लम है, लाइक नहीं एंड पीपल यू आर हु राइट, स्टिक मतलब अप। अगर वो अगर सॉरी अगर वो टाइम पे भी आता राइट, लाइक व्हेन टेरी वाज रिटायरिंग एंड Cahill हाँ, didn't really have a partner. If he had come that time also, like that was such a strong, like such a good team, and he would have also like करेक्ट made it करेक्ट, much stronger. I think हाँ, yeah, you are इमेजिन right. He would इमेजिन have done ना, इमेजिन गैरी कैल एंड थियागो सिल्वा द डिफेंसिव पार्टनर भाई, गांड फाड़ well. होता भाई, वो क्या होता है भाई कोई कौन चीट पाता भाई, एंड Yeah, दैट टाइम का थियागो सिल्वा एंड गैरी कैल एट हिज पीक, हाँ तो वही है वेरी मतलब गुड। लाइक यू सेड टाइमिंग थोड़ा उसका ऑफ था ऑफ हाँ, लाइक नॉट जस्ट हिज टाइमिंग ऑफ कमिंग हियर बट आल्सो द प्लेस वेयर द क्लब वाज when या he came, right? But nonetheless, या they still won the Champions League under his and Tuchel's ट्रू ट्रू, tutelage, या right? Um, and काफी कुछ सपोर्ट किया है, like loved by all player, all Chelsea fans, and yeah, like the he's entire a he like yeah, he's not even only him, his wife as well, like हाँ they're like a very like full full family family was thing, yeah, yeah, when it's his very like children played in the academy and all, तो ये yeah, मतलब हो जाता है, कोई कोई प्लेयर्स बहुत ऐसे होते हैं। आई फील एक्चुअली फॉर दैट मैटर इवन एस्पी मैन मतलब has हेवीली been also, अंडररेटेड, yeah. हेवीली अंडररेटेड। एक तो बहुत ही मतलब फॉर नेग्लिजिबल अमाउंट्स ही हैड जॉइंड, ओके, ऑफ Hmm. मनी, सो इट डिडंट इवन कॉस्ट मच। Correct, correct. लाइक इनिशियली हेल्ड दैट रिकॉर्ड कि भाई कोई उसको बीट ही नहीं कर पा रहा था, नो मिस्टेक्स मेड वाला रिकॉर्ड ऐसा था वो सब। Yep. सैडली just like now he's gone, he's playing in Atletico, Yeah. and yeah मतलब of course everyone has to move on, but वही थोड़ा जल्दी गया। Coming back to your original point, आर्सेनल को चले जाते हैं again, like I mentioned, हाँ. I think वो उनके family is settled in London, right, and there is no other club Yeah. who's willing to pay that kind of money, Correct. Correct, okay, correct. and There's a and chance of, also in London। yeah, and हाँ there's a chance ना प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट प्रीमियर लीग जीतेंगे, हार्ट अटैक टिकी टाका, वो भी एक सीन रहता है। क्या ठीक We are था। closest to, and एक और सीन रहता है प्रोजेक्ट, we are closest to Manchester City, आर्टेटा हाँ है, वेरी बिग लाइक बिग प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, तो वो भी एक वो रहता है ना लाइक जाने का, तो वही हो जाता है, लाइक आई अंडरस्टैंड जाने का क्या सीन है जॉर्जिनियो का, हैवर्ट्स वेवर्ट्स का, बट आई डोंट थिंक आर्सेनल गोना विन एनी लीग आर्टेटा के अंडर, बिकॉज सीरियसली यार, आर्सेनल बीइंग ये आर्सेनल। पिछले 1-2 साल अगर नहीं जीते ना, मुझे नहीं लगता अब जीतेंगे, बिकॉज
जो हाँ, जो last 2 years closest they have been. भाई अब नहीं जीते तो कब जीतोगे तुम भाई? वही सेम सेम मैं ही सोचता हूँ, क्योंकि लाइक दिस वाज द टाइम टू विन फॉर देम. इट वाज दे हैड टू स्ट्राइक द नेल व्हेन द iron was hot, they didn't strike the nail. And again, अभी नहीं जीते तो सेम थिंग लाइक लिवरपूल. ठीक है, लिवरपूल स्टिल दे वन दैट चैंपियंस लीग एंड दे वन द लीग वन टाइम, बट मुझे Correct, नहीं correct. लगता आर्सेनल के साथ ये ये तो कोई होने वाला है. ट्रॉफी नहीं जीते, नहीं तो एफए कप जीते लाइक 2-3 साल पहले. हम्म. लाइक ये सब छोड़ो, एफए कप कार्लिंग कप छोड़ो, प्रीमियर लीग एंड वो भी चैंपियंस लीग कुछ नहीं. नहीं, वो कुछ FA Cup भी they had won against us when that Pulisic had got injured and there was like हाँ uh, हाँ, करेक्ट करेक्ट. okay, तो वो सब हुआ था वो मैच में, तब जीते थे. कुछ फाउल वाउल भी नहीं दिए थे and all of that. वही वही, हाँ यार, दैट्स. uh, What are your thoughts on United this season? आई थिंक टॉप सिक्स मैन. आई थिंक इस बार टॉप सिक्स कंसोलिडेट होगा. -1 क्लब, सो वी हैव टू सी हु Okay. दैट क्लब इज, बट टॉप फाइव तो जो बिग सिक्स है उसमें से रहेगा मेरे हिसाब से, विच इज योर जो था. लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी, चेल्सी, टॉटनहम एंड यूनाइटेड. करेक्ट. इन इन छह में से ही पांच भरेंगे स्लॉट्स, और जो एक स्लॉट है वो ब्राइटन, एस्टन विला ऐसे कोई ले सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है. Okay. बट Yep. Let's start with one. Let's start with, yeah. I also believe the same. Also believe the same. But let's start with like clubs one by one. Big Six का club से start करते हैं. Aston Villa finished कौन से position में? फिफ्थ में last season. फोर्थ और फिफ्थ. They're playing the Champions League. I'm not sure. Are they playing? I think तो yeah, they श्योर finished से fourth. Right? देखना पड़ेगा, रुको यार मैं भूल गया अभी. Yep, yep, So yep. much has I think they happened. finished. I think they finished fourth. They're playing the Champions League. Okay, Spurs fifth finish game. Hmm. Okay, in a new manager, I think City is the clear winner this season as well. My Yeah, feeling even because I think like City is I the feel favorite. I feel In because fact, like Liverpool. No, yeah, go ahead. no, in fact, I think this time there won't be that much competition. So अभी तक Yeah, लिवरपूल, correct. Liverpool, Arsenal जाती थी, but Arsenal fake competition देती है मुझे. आर्सेनल फेक कंपटीशन है. Last 20 years में fake competition देती है हर team. बट नॉनदलेस मतलब ऐसा लगता था कि ठीक है, देयर वाज सम कंपटीशन. आई फील लाइक दिस टाइम इट माइट नॉट बी द केस. Yeah, Also, true. I think maybe because Arsenal players might also be demoralized, right? Two years सब चैलेंज किया, कुछ नहीं जीता टाइप्स है ना. So I think this time it will be difficult unless of course Arteta has worked some Klopp magic and is Yeah, like yeah. uh, 2 साल नहीं तो तीसरे साल से ही टाइप्स एंड जीत. बट Correct. बट What do आई you? थिंक Oh, by the way, what do you think about Newcastle? Yeah, Newcastle yeah, last season played so well. This season भाग दिया, Champions League में ठीक ठाक खेला. And there's a news, the consortium that purchased Newcastle is selling them again. So what's the scenario with एक्चुअली Newcastle like? Go हाँ ahead. वही मुझे लग रहा है सिनेरियो विद न्यूकैसल इज सिंपल. जब वो व्हेन देयर वाज अ टाइम विदाउट FPP फॉर like not so relevant clubs to rise up, including Chelsea and Manchester City, उन लोग ने कर लिया. न्यूकैसल का टेक ओवर FPP के बाद हुआ, FFP के बाद हुआ, FFP, FFP, है ना. um, so obviously it wouldn't be that like simple to pump in money, like pick up some good players and such. तो वो तो नहीं कर पाए. uh, Again, I think Newcastle, I have always felt they are a very big club in UK, okay, but for some reason they have never been able to like convert it. Out of like Chelsea, other than like Chelsea, United, City, and Arsenal and Liverpool, and maybe Tottenham also to certain extent. I think इसके बाद Newcastle है in terms of like fan base and this and that. correct. But Because वो of शायद, Santiago Muniz as well. हाँ वो गोल मूवी ने भी काफी हेल्प किया है. Correct. गोल, बट नो अदरवाइज ऑल्सो लाइक उनका जो फैन बेस है काफी लाइक वोकल है, प्रेजेंट है. लाइक पता चलता है कि ये न्यू कैसल का फैन बेस है, राइट. लाइक एज कम्पेयर टू से, नो ऑफेंस टू से क्रिस्टल पैलेस, बट मतलब न्यू कैसल के फैंस अलग होते हैं, ठीक है, मतलब वो ऐसे एकदम हाँ, फैन but I understand where this is coming from. People को उतना knowledge नहीं है to like इसको. understand this. You have to watch the ये Newcastle fan base के knowledge को देखने के लिए हाँ you have to watch the documentary Sunderland Delight. हाँ, तो Then वही Sunderland वही है Newcastle हाँ Sunderland
तो वो का जो rivalry समझने के लिए it's a very good हाँ documentary. Sunderland till I die देखो, like हाँ direct rivals, you understand the whole scenario of the city. Yeah, go ahead. बट वही पॉइंट हाँ ये है कि मतलब मुझे लगता था कि दे विल ऑलवेज लाइक देयर बी सम टाइम व्हेन न्यूकासल विल राइज एंड आई थॉट दिस correct, बाय correct, correct. दे आर No, परचेज that was our thinking as well as when we were young, when we started Premier हाँ League. Like Newcastle, अभी rise करेगी, अभी rise करेगी, अभी rise हाँ करेगी, and then suddenly they finished in top four, and we were हम्म like, तो एक सीजन पहले, 2 सीजन पहले, we were like, yes, Newcastle has arrived with new हम्म consortium as well, and we were okay with that. We were not like hating like City and everything, because यार बचपन से Newcastle के लिए we had a soft corner. एक तो सॉफ्ट या कॉर्नर था न्यूकासल. न्यूकासल भाई अलग ही सही, टून्स एंड एटसेट्रा, इतने लाइक लेजेंडरी प्लेयर्स ना, पैक पीसी से डेब्बा, वो भी हमने देखा है ना, लाइक सिनारियो, आरआईपी जेजे चेक टियोटे, ओकोचा चेक टियोटे जेजे आरआईपी ओकोचा भाई, जे ओकोचा भाई, लाइक एलन shearer जो स्टार्ट किया था हाँ हमने, एलन शीरर एलन या shearer भाई, यू कांट फॉरगेट एलन shearer भाई. वी हैव करेक्ट सीन हाँ एवरीथिंग विद न्यूकासल, एंड न्यूकासल के लिए लाइक ओजी प्रीमियर लीग फैंस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा था, एंड लाइक राइज फॉर न्यूकासल लाइक इट्स वेरी गुड फॉर मी. अचानक से लाइक एक सीजन में राइज होके डाउन, लाइक इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी ना, एक सीजन में राइज होके एंड देन द थिंग्स हैपन, यू आर डाउन सेइंग. तो नहीं है आई वुडंट से डाउन दे फिनिश अबव यूनाइटेड बट हाँ वही है हाँ अभी वो सेल हो जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली इट या वाज लाइक अच्छा एफएफपी, एफएफपी, यू कैन नॉट बाय द टीम इनटू लाइक सक्सेस और करेक्ट, व्हाटएवर यू बाय एंड मेक करेक्ट. अ गुड टीम तो अभी बोर हो गए तो हटा देते मुझे लगता है नो ऐसा बट ऐसा हो हाँ, मतलब ऐसा ही है, मतलब आई डोंट सी द पॉइंट, लाइक क्यों खरीदा था, लाइक व्हाट वाज द सिनेरियो, आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक खरीदा ही क्यों था यार, इतनी जल्दी बेचना है तो, लाइक you have to understand the ins and outs, no, like क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. Like, I don't think So people. wait, so for me it's simple. Okay, imagine you are like a sheikh or an emir or someone. Okay, Middle East, a lot of oil money. अभी तुम्हें like you want to like buy a team, make it big, make it win. But वो टाइम नहीं रहा है. Okay, एफएफपी की वजह से अभी तुम नहीं कर पा रहे हो. तो पहले तुम आए तुम्हें लगा कि कैसे भी कर लोगे है ना. तो बट एफएफपी को ही खरीद लो ना, लाइक सिटी. फैक्ट्स, फैक्ट्स. नहीं नहीं that's true but see City also they have been very smart they made all the mistakes they won everything and now they are just sitting on those cases or whatever है ना हाँ, uh, केसेस क्या केसेस, कुछ तो आगे बढ़ेगा ना, लाइक सिटी को but अगर केस नहीं वो होगा. but अभी स्ट्रिक्ट हो गया है ज्यादा ना over the years it becomes more strict so I feel like हाँ तो स्ट्रिक्ट हो गया, लाइक सो व्हाई आर एवर्टन एंड द अदर क्लब्स बीइंग penalized, व्हाई नॉट सिटीज बीइंग हाँ penalized, वो I भी तो know I फैक्ट. felt it was very harsh कि Everton was No, penalized Everton was very harsh last season. हाँ What happened to Everton was very harsh. seriously मतलब I thought the Even for fans not were even fighted even even Nottingham Forest के साथ भी जो हुआ. हाँ वही मतलब Why? ये तो काफी बेकार लगा कि एवर्टन के साथ तुमने एक एक उसके लिए तुमने उनको पॉइंट डिडक्ट कर दिए यहाँ पर 100 के ऊपर वही, केसेस है और वही. तुम पॉइंट नहीं डिडक्ट कर रहे हो विच And they're इज winning treble, they're winning Premier League every year. They bring Haaland and players like this. हाँ Wait, और हालैंड उसके बाद 60 मिलियन में ला रहे हो ऑब्वियसली देयर सम लाइक घपचा एट द बैक राइट Haaland 60 है, उससे पहले Grealish 100 है. shall we end it for today But हो yeah, गया we should end. Yeah, let's end so it maybe with we this. can just end Euro, it Euro. Yeah, yeah. Let's cut off Euro. We'll talk about that later next week or something. हाँ Let's end it. Yeah. ओके चलो देन ठीक है बाय बाय चलो take